Hello everyone, my name is Karan Mashru. Welcome to the second part of the Bellman-Ford algorithm video. So इस वीडियो में बेसिकली हम Bellman-Ford algorithm के steps देखने वाले हैं एंड इस क्वेश्चन पे ड्राई रन करने वाले हैं. Okay, so what does Bellman-Ford algorithm say? It says that take a distance array, okay, and these are the steps. Okay, so take a distance array equal to size of the vertices. So here the number of vertices is 6, which are numbered from 0 to 5. Okay, so I will take this distance array, okay, where finally distance of I will denote the shortest path distance from source node to node I. Here the source node is 0. These are the edges I have written. So this is U, this is V, and this is W. So if there is a directed edge from U to V with edge W, so that I have denoted here. Okay? So take a distance array and mark the distances of all the nodes as infinite by default. Okay? Now make the distance of the source node as 0, because source to source shortest path कितना होगा 0 होगा. Okay, so make the distance of the source node as 0. Now the algorithm says, so this is the set of vertices. Okay, so the algorithm says relax complete set of vertices, complete set, sorry, this is the set of edges, this is the set of edges. Okay, so now the algorithm says relax complete set of edges v minus 1 times, where v is the number of vertices. Okay, I hope you know what is the meaning of relaxing an edge. So we'll traverse all the edges and relax them one time, then we'll traverse all the edges again, relax them 2 times, and so on. We will do it for 5 times, because here there are total 6 vertices. So we have to relax v minus 1 times. ठीक है, इसमें हम आगे और डिटेल में देखेंगे कि ये v minus 1 times एग्जैक्टली क्यों होता है, कब v minus 1 रिक्वायर्ड होता है. बट इट इज़ बेस्ड ऑन द कंसेप्ट जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, दैट एनी शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू नोड्स इन अ ग्राफ ऑफ v vertices कैन कंटेन एट मैक्स v minus 1 edges. सो रिलैक्स कंप्लीट सेट ऑफ एजेस v minus 1 टाइम्स. ओके, सो ये हमारा जो है, अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे इसको मैं नीचे लिख लूँ. ओके, एंड नाउ इफ आई जूम आउट अ लिटल बिट एंड इफ आई रिलैक्स 1 by 1, सो सबसे पहले इस एज को रिलैक्स करते हैं. ओके, ऑल्दो मैंने एग्जाम्पल थोड़ा बड़ा ले लिया है, बट दैट्स फाइन. सो दिस इज u, दिस इज v, एंड दिस इज w. सो इफ डिस्टेंस टिल u plus w is less than distance till v, then update distance till v as distance till u plus w. This is the relaxing the edge equation. आपने relaxing the edge वाला वीडियो आई होप देखा है, मैं यहाँ रिपीट नहीं कर रहा. So if distance till u, that is distance till 1, plus w, age weight is 3, is less than distance till 2. So distance till 1 क्या है, infinite. Infinite plus 3 is less than distance till 2, that is infinite. No, this is not true. So now we'll come to the second equation. ठीक है, तो distance till 1 plus age weight 9 is less than distance till 3. So distance till 1 is infinite. Infinite plus 9 is less than infinite. No, this is not true. Okay, so we'll come to the third equation. Distance till 2 plus age weight 1 is less than distance till 4. बेसिकली मैं ये कंडीशन चेक कर रहा हूँ, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये एग्जीक्यूट करेंगे. सो डिस्टेंस टिल 2 इज इनफाइनाइट. इनफाइनाइट प्लस 1 इज लेस देन डिस्टेंस टिल 4 इनफाइनाइट. नो, सो विल कम टू द नेक्स्ट इक्वेशन. सो डिस्टेंस टिल 3 plus age weight 1 is less than distance till 5. Distance till 3 is infinite, plus 1 is less than distance till 5 infinite. No, so we'll come to the next equation. Distance till 3 plus age weight minus 6 is less than distance till 4. Distance till 3 is infinite. Infinite minus 6 is less than distance till 4, that is infinite. Infinite minus 6 is less than infinite. No, so we'll come to the next equation. Distance till 4 plus 7 is less than distance till 5. So distance till 4 is infinite. Infinite plus 7 is less than infinite. No, so we'll come to the next equation. Distance till 0 plus 1 is less than distance till 2. Is this true? Distance till 0 is 0, plus age weight 1 is less than distance till 2 infinite. Yes, so we'll update distance till 2 as distance till 0 plus 1, plus 1. Yes, so this will be updated to, just a second, distance till 0 plus age weight is 2 na, so distance till 0 plus age weight is less than distance till 1.
So 0 plus 2 is less than infinite. Yes. So distance till 1 will be updated to distance till 0 plus age weight 2, that is 2. So this will be updated to 2. बेसिकली हमने ये पाथ डिस्कवर कर लिया फ्रॉम 0 to 1. ठीक है. देखो यहाँ पे एक मैं थोड़ा और डेप्थ अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ. यहाँ पे इक्वेशन है डिस्टेंस टिल 1 प्लस एज वेट 9 इज लेस देन डिस्टेंस टिल 3. सो बेसिकली इट्स ट्राइंग टू गो फ्रॉम 1 to 3. बट ये एज रिलैक्स नहीं हो पाई थी क्योंकि ये एज रिलैक्स नहीं हुई थी. ये एज यहाँ पे रिलैक्स नहीं हो पाई थी क्योंकि अभी ये एज रिलैक्स नहीं हुई थी. डिस्टेंस टिल 1 इनफाइनाइट था. इनफाइनाइट प्लस 9 इज लेस देन इनफाइनाइट. नो. तो ये एज रिलैक्स नहीं हुई थी. अब यहाँ जाके ये वाली एज 0 to 1 वाली रिलैक्स हो गई है. डिस्टेंस टिल 1 हैज़ बिकम 2. तो अब नेक्स्ट आइट्रेशन में ये एज भी रिलैक्स हो जाएगी. ठीक है. सो नाउ द लास्ट इज डिस्टेंस टिल 0 plus age weight is 6 is less than distance till 2. Distance till 0 is 0. 0 plus 6 is less than distance till 2. Distance till 2 is infinite. Yes. So distance till 2 will become 6. So this will become 6. So basically we have discovered this path. Okay. So that's the idea. So what I will do is I will just take this completely. Okay. And I will shift it to bottom. Okay. So here the distance is 2, here it is 0, 2, and I'll rub this part. Okay. Now, so we have completed one iteration. Total we have to do 5 iterations. So let's start with the second iteration. So distance till 1 plus age weight 3 is less than distance till 2. Distance till 1 is now 2. 2 plus 3 is 5. 5 is less than distance till 2, 6. Yes. So distance till 2 will be updated to distance till 1 plus 3, that is 5. तो ये अपडेट हो जाएगा टू 5. बेसिकली हमने ये वाला पाथ एक्सप्लोर किया फ्रॉम 0 to 2 वाया 1. सो 0 to 1 का डिस्टेंस 2 था प्लस ये एज वेट 3. तो डिस्टेंस टिल 2 वाया 1 क्या हो जाएगा 5. तो ये 6 से कम है तो ये अपडेट हो जाएगा. ठीक है. नाउ दिस. सो डिस्टेंस टिल 1 प्लस एज वेट 9 इज लेस देन डिस्टेंस टिल 3. सो डिस्टेंस टिल 1 इज हाउ मच 3. 3 plus 9 is 12. 12 is less than distance till 3. Distance till 3 is infinite. Yes. So distance till 3 will be updated to 12. So basically we have discovered this path. Distance, just a second. Distance till 1 is how much? It is 2, right? It is 2. 2 plus 9 is less than distance till 3. Distance till 3 is infinite. So distance till 3 will be 2 plus 9, that is 11. Okay. So basically we have discovered this part to reach 3, 0 to 1 and 1 to 3. Total distance is 11. Next is this. So distance till 2 plus age weight is 1. Distance till 2 plus age weight 1 is less than distance till 4. So distance till 2 is how much? 5. 5 plus 1 is less than distance till 4, that is infinite. Yes. So distance till 4 will be updated to 6. Okay. So basically we have explored which path? This 0 to 1, 1 to 2 and 2 to 4. Distance is 6. Now this one, distance till 3 plus age weight 1 is less than distance till 5. Distance till 3 is 11. 11 plus 1 is 12. 12 is less than infinite. Yes. So distance till 5 will be updated to 12. So basically we have discovered this path 0 to 1, 1 to 3 and 3 to 5. Okay, that is 12. Then 3 to 4. So distance till 3 plus age weight minus 6 is less than distance till 4. Distance till 3 is how much? 11. 11 minus 6 is less than distance till 4, 6. 5 is less than 6. Yes. So distance till 4 will be updated to 5. तो ये अपडेट हो जाएगा टू 5. बेसिकली हमने 0 to 1, 1 to 2, 2 to 4 ये पार्ट डिस्कवर किया था. डिस्टेंस था 6. अब हमने 0 to 1, 1 to 3 और 3 to 4 ये पार्ट डिस्कवर कर लिया टू रीच 4 जिसका डिस्टेंस है 5. ओके. नेक्स्ट इज दिस. सो डिस्टेंस टिल 4 plus age weight 7 is less than distance till 5. So distance till 4 is how much? Distance till 4 is 5. 5 plus 7 is less than distance till 5, that is 12. 12 is less than 12? No. Next is this. ये दोनों अब अपडेट नहीं होंगे. ठीक है ना. आप ट्राई कर सकते हो. डिस्टेंस टिल 0 प्लस एज वेट 2 इज लेस देन डिस्टेंस टिल 1. डिस्टेंस टिल 0 इज 0. 0 प्लस 2 इज लेस देन डिस्टेंस टिल 1, that is 2. No. Similarly for this, distance till 0 plus 6 is less than distance till 2. So distance till 0 is 0 plus 6 is less than distance till 2, that is 5. No. So
ये अपडेट नहीं होंगे, तो हमारे 2 आइट्रेशंस ख़त्म हो गए, ठीक है। नाउ अगेन लेट मी मूव दिस होल पार्ट अ लिटल डाउन, ओके। ऑल्दो मैं रब भी कर सकता हूँ, क्योंकि डाउन मूव करके भी ये सिर्फ आपका जो है बेसिकली हमने जो लिखा था वो तो एक तरीके से प्रॉपर हमने जो जिस ऑर्डर में लिखा था वो तो बचा ही नहीं। एनीवेज, सो आपके 2 आइट्रेशंस हो गए, टोटल आपको 5 करने हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड आइट्रेशन। सो डिस्टेंस टिल 1 plus age weight 3 is less than distance till 2. So distance till 1 is 2, 2 plus 3 is less than distance till 2, 5. 5 is less than 5, no. So let's come to the second one. So distance till 1 plus age weight 9 is less than distance till 3. Distance till 1 is how much? 2. 2 plus age weight 9 is less than distance till 3. 11 is less than 11, no. Let's come to the third one. Distance till 2 plus 1 is less than distance till 4. Distance till 2 is 5. 5 plus 1 is less than distance till 4, that is 5. 6 is less than 5, no. Let's come to the fourth one. Distance till 3 plus 1 is less than distance till 5. Distance till 3 is 11. 11 plus 1 is less than distance till 5. 12 is less than 12, no. So let's come to the fifth one. So distance till 3 minus 6 is less than distance till 4. Distance till 3 is how much? 11. 11 minus 6 is less than distance till 4 is 5. 5 is less than 5, no. Let's come to the sixth one. So distance till 4 plus 7 is less than distance till 5. So distance till 4 is 5. 5 plus 7 is 12. 12 is less than distance till 5. 12 is less than 12, no. Let's come to the seventh one. अब ये 7th और 8th तो अपडेट होंगे ही नहीं, हम पता है। डिस्टेंस टिल 0 plus 2 is less than distance till 1. 2 is less than 2, no. And the last one, distance till 0 plus 6 is less than distance till 2. Distance till 0 is 0 plus 6 is less than distance till 2, 5. 6 is less than 5, no. तो थर्ड आइट्रेशन भी हमारा हो गया, बट यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि थर्ड आइट्रेशन में एक भी एज रिलैक्स नहीं हुई, नॉट ए सिंगल एज रिलैक्स्ड, ओके। तो एक बात समझो, अगर थर्ड आइट्रेशन में एक भी एज रिलैक्स नहीं हुई सक्सेसफुली, इफ कंडीशन हिट नहीं हुई रिलैक्सेशन की, तो किसी भी नोड का डिस्टेंस अपडेट नहीं हुआ होगा। ये जो डिस्टेंस एरे है वो किसी भी इंडेक्स का अपडेट नहीं हुआ होगा। अगर थर्ड आइट्रेशन में एक भी एज रिलैक्स नहीं हुई तो एक भी डिस्टेंस इंडेक्स अपडेट नहीं हुआ होगा, और एक भी डिस्टेंस इंडेक्स अपडेट नहीं हुआ है, एक भी एज रिलैक्स नहीं हुई है, तो फर्दर आइट्रेशन में भी कोई चेंज नहीं आएगा। See what I'm trying to say is in the first iteration these two edge got relaxed, बाकी कोई रिलैक्स नहीं हुई, बट ये दोनों एज रिलैक्स हुई, उसकी वजह से डिस्टेंस टिल 1 एंड डिस्टेंस टिल 2 got updated from infinite to 2 and 6. And because distance till 1 and 2 got updated, that's why the edges outgoing from 1 and 2 got relaxed. पहले आइट्रेशन में ये सारी एज क्यों रिलैक्स नहीं हुई थी? क्योंकि डिस्टेंस टिल 1 एंड डिस्टेंस टिल 2 वाज इनफाइनाइट। सोर्स नोड से 1 या सोर्स नोड से 2 तक का ही डिस्टेंस हमने एक्सप्लोर नहीं किया था, तो वहाँ से आगे कैसे एज रिलैक्स होती? बट इन द फर्स्ट आइट्रेशन जैसे ही ये एज रिलैक्स हुई, बिकॉज द डिस्टेंस ऑफ 1 एंड 2 गॉट अपडेटेड, सो फर्दर दीज एजेस गॉट रिलैक्सड एंड द डिस्टेंस गॉट अपडेटेड। बट अगर थर्ड आइट्रेशन में कोई एज रिलैक्स ही नहीं हुई है, इसका मतलब कोई डिस्टेंस अपडेट ही नहीं हुआ है, तो इसके फर्दर आइट्रेशंस में भी एक भी एज रिलैक्स नहीं होगी, बिकॉज एवरी डिस्टेंस वैल्यू इन डिस्टेंस एरे वैल्यू इज सेम। सो इफ यू ट्रावर्स एंड अगेन ट्राई टू एग्जीक्यूट ऑल द इफ कंडीशन सेम, ऑल द सेम इफ कंडीशन, हाउ कैन एनी एज रिलैक्स? अगर इस आइट्रेशन में कोई एज रिलैक्स नहीं हुई तो आगे वाले आइट्रेशन में भी नहीं होगी, क्योंकि डिस्टेंस एरे ही अपडेट नहीं हुआ, सेम इफ कंडीशंस एग्जीक्यूट होगी। कहने का मतलब क्या है, इन द वर्स्ट केस यू नीड टू एग्जीक्यूट v-1 टाइम्स, वो भी एग्जांपल हम फर्दर वीडियोस में देखेंगे। बट अगर उससे पहले अगर कोई ऐसा आइट्रेशन आता है जिसमें एज एक भी एज रिलैक्स नहीं होती सक्सेसफुली, then after that iteration you can stop, because if that iteration does not relax any edges, how can further iterations relax any edge? Okay, because कोई भी डेटा अपडेट हुआ ही नहीं, and you have got the shortest paths.
So from 0 to 0 it's 0, 0 to 1 it's 2, 0 to 2 it's 5, 0 to 3 it's 11, 0 to 4 it's 5 and 0 to 5 it's 12. ये शॉर्टेस्ट पाथ डिस्टेंस है आपके, और आपको सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम अप्लाई हो गया है। सोर्स नोड 0 से बाकी सभी नोड्स का आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिल गया है। अब जो भी रिक्वायर्ड है वो तुरंत आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपको 3 का चाहिए तो डायरेक्टली d ऑफ 3 यूज़ कर लीजिए। Okay, so that's the Bellman-Ford algorithm. If I repeat, you take a distance array of size v, make all the indexes as infinite, then make the distance of the source node as 0, and then relax the complete set of edges v minus 1 times. But in between, in a particular iteration, if you do not get any edges relaxed, then there is no need to do further iterations. It means you have already got the shortest paths, and further iterations will also lead to no changes in the distance array and no edges will be relaxed in further iterations also. So to save time, you can stop if you encounter any of the loop where there are no edges been relaxed. Okay, so that is about the Bellman-Ford algorithm. That is the dry run. That is how it will give the output. नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कोड करके देखेंगे। ओके, आई होप आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू।